क्या कर रहे थे हम लोग? लास्ट क्या किया था हमने? पर्सनालिटी फैक्टर वी हैड टू राइट. सो वी हैव डिस्कस एवरीथिंग ऑफ द प्रेसिडेंट. देन वी विल स्टार्ट पार्लियामेंट. न्यू टॉपिक है, जल्दी से इसे लिख लीजिए. स्टार्ट राइटिंग. So we were writing about personality factor. Write down. India has seen activist presidents. Has seen activist presidents like Rajendra Prasad, or K.R. Narayanan, comma, who were not willing to play the role of nominal head. Willing to play the role of nominal head and asserted their independence. Over the prime ministers. Full stop. Next para. At the same time, presidents like Venkat Raman used to call himself the copycat president. Full stop. He further mentioned that president in India is like an emergency lamp. President in India is like an emergency lamp, comma, which comes into play only when the main switch is off. Full stop. Last para, write down. From above discussion, it can be seen that the personality of the president plays a critical role. In the functioning of the office of president. Full stop. Now write down last question that we have to ponder. So this is over. The constitutional position of president over है. अब next लिखिए in a case study form. Write down case study. Put a hyphen. Case study hyphen. Should India adopt? लिख लिया हमने. Should India adopt a presidential form of government? हो गया. तो फिर काहे हम टाइम वेस्ट करें.
चलो फिर हो गया तो खत्म करते हैं। चलिए, इफ दिस वाज डन तो फिर लास्ट हेडिंग लिख लीजिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ। क्या चेक कर रहे हैं? क्या चेक कर लो, करो चेक कर लो। चलो हो गया ना, कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। लिख तो केस स्टडी दूसरी लिख लीजिए, केस स्टडी किचन कैबिनेट। यस, केस स्टडी किचन कैबिनेट, KITCHEN, किचन कैबिनेट. What is this kitchen cabinet idea? Actually, it was coined during the time of Indira Gandhi. Because Indira Gandhi के time पे क्या होता था? She used to have personal advisors, and whatever personal advisor cooked. तो किचन में क्या होता है? That you are sitting for on a dining table. So किचन में the food is made and just served to you to eat. उस वक्त आप ये नहीं बोल सकते दूसरा खाना लाओ. It has already been cooked. Same kitchen cabinet में क्या होता है? It is a small coterie of personal advisor of the prime minister who outside of the cabinet decides and influence the prime minister. Prime minister takes the final call and then just go to the cabinet meeting for approval only. कैबिनेट का सिर्फ इतना रोल होता है टू अप्रूव वट एवर द प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलरेडी अग्रीड विद हिज किचन कैबिनेट, एज हैपन इन केस ऑफ इंदिरा गांधी. इफ यू नो दैट द व्हेन इंदिरा गांधी imposed emergency, the maximum atrocities were not committed by Indira Gandhi, it was committed by her son Sanjay Gandhi. ठीक है, संजय गांधी. So BJP who criticized Indira Gandhi for what she did during emergency, actually they should have criticized Sanjay Gandhi, but they cannot. Why? Because Sanjay Gandhi's wife, Menka Gandhi, is a BJP person. She is in BJP, MP, and even her son, I think, naam dena hai us vyakti ka, even that person is in BJP. So the person who really committed atrocities, the 4-point program, Sanjay Gandhi had a 4-point program, जिसमें one of them was including forceful sterilization, beautification of the country, जिसमें forcefully slums were demolished and they were removed forcefully. Violating the law, violating the norms, everything was violated. This has always been a problem with strongman governments. जैसे अभी रिसेंट में हुआ है, आई थिंक उत्तराखंड है, कहाँ पे हुआ है, द हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट वाज वेरी क्रिटिकल दैट एक फैशन बन गया इंडिया में टू डिमोलिश हाउसेस. ये जस्टिस नहीं है, मैंने आपको पहले भी समझाया था. जेसीबी, यूजिंग जेसीबी, डूइंग एनकाउंटर्स, दिस इज नॉट जस्टिस, दिस इज रिवेंज एंड दिस इज एस्केप. बिकॉज जस्टिस सर्व करने के लिए रिफॉर्म्स लाना पड़ता है. यू हैव टू रिफॉर्म पुलिस, यू हैव टू रिफॉर्म जुडिशरी, ब्रिंग न्यूमरस थिंग्स, टेक एफर्ट, नेगोशिएट अ लॉट ऑफ पावर्स हु डोंट वांट दोज रिफॉर्म्स, तब आप जाके कुछ बदल पाओगे. तो नोबडी इज इंटरेस्टेड, तो दे आर हैप्पी, दे आर जस्ट हैप्पी टू मेक पीपल हैप्पी, कि जनता को बस खुशी मिल जाए और जो भी हो, चाहे न्याय मिले ना मिले. अब सोचिए, बाय डिमोलिशिंग, मान लेते हैं, बाय डिमोलिशिंग समबडीज हाउस, वुड इट सर्व जस्टिस टू द पीपल हु आर फाइटिंग फॉर देयर ओन पेंशन इन कोर्ट? एक रिटायर्ड व्यक्ति जो अपनी ही पेंशन के लिए कोर्ट में लड़ रहा है, क्या उसे न्याय मिल जाएगा? A lot of people who are in India's jail under trials without any cases, and a lot of time they were proven innocent after 20-25 years. क्या उन्हें न्याय मिल जाएगा उससे? नहीं मिलेगा. You need fast justice. You need proper bureaucracy. You need proper police investigation. You need to separate their role. Detective and law and order should be two different roles. There should be proper office of detectives who shall not be controlled by the politician. The politician can control law and order. They can control police part. But detectives should be independent. They should not be answerable to anyone. And they should not be prone to transfers anywhere. They should be regulated separately. Normal police आप चलाते रहो. You control normal police, keep controlling it. बस investigation का जो part है, that part shall not be governed by the government. That part shall be governed by autonomous detectives. India में ऐसा कोई concept नहीं है. A lot of Western countries have accepted this concept. उनकी जो law and order police होती है, the police which wears uniform is separate, and detectives are separate branch, uncontrolled by the executive. So that's why their role, their record of criminal punishment is better than India's. और India's में आपको पता ही है, depends upon political impulse. If a politically connected people, you are above the law. We have seen the case of Bridgebhushan. जो जिन कानून में उसके खिलाफ एफआईआर हुई थी, अगर नॉर्मल व्यक्ति के खिलाफ होती, उसकी जिंदगी जेल में बीत जाती, चाहे वो इनोसेंट होता. बट बिकॉज ही वाज पावरफुल कनेक्टेड, कुछ नहीं हुआ. एंड द पीपल हु वर अक्यूजिंग हिम छोटे मोटे लोग नहीं थे. एनीवे, सो दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड. समटाइम वी हैव सुपर कैबिनेट. एक तो कैबिनेट होती है अंडर द लॉ, एक सुपर कैबिनेट होती है आउटसाइड ऑफ द लॉ.
which Cook's idea. जैसे राजीव गांधी इंदिरा गांधी टाइम पे she had a coterie of advisor in primarily among them was her son संजय गांधी. ठीक है, so that is what we had. अब it is suggested that even current prime minister have a kitchen cabinet, और मे भी हो सकता है यहाँ पे gender biases भी हो कि kitchen because she was female तो kitchen word लगा दो, but I don't know, you can coin any idea. तो मुझे idea नहीं इस बारे में why it was called kitchen cabinet. Some other idea could be coined out. So that is why I told you, no, you may not have biases, but stereotypes, you may not have stereotype, by biases works. It always works. चलिए, anyway, concept clear है. So basically you pre-cook an idea and present to the cabinet for ratification. That's it. लिख लीजिए इसे. Shadow cabinet यहाँ नहीं होता. Shadow cabinet is a concept which is found in Britain. Britain में क्या होता है? You have prime minister and you have council of minister. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हर तरह के मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी है. सो व्हाट हैपेंस इज टू मिरर देम, वहां पे एलओपी नहीं होता. जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, दे आर कॉल्ड एज प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग. सिमिलरली दे हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन वेटिंग, एंड सिमिलरली ऑल द पीपल. So there will be a home minister who is in the government. There will be a counter home minister in waiting in a position. This is called shadow cabinet. इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रोल नहीं है, बट इसका फायदा कहाँ हो सकता है? पर ये सिस्टम तभी एप्लीकेबल है व्हेन यू हैव अ टू पार्टी सिस्टम. मल्टी पार्टी में हो ही नहीं सकता. मल्टी पार्टी में आप कैसे कर लोगे? यहाँ पे क्या टू पार्टीज हैं. देयर इज वेरी क्लियर, इधर कंजर्वेटिव पार्टी विल बी इन पावर और द लेबर पार्टी. दो ही पार्टी है उनके पास. तो लेबर पार्टी कैन हैव मिररिंग पीपल. अब यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, कैसे बनाओगे मिरर? So shadow cabinet is not applicable in India. It's because India has a multi-party system. It is applicable only in two-party system. हालांकि effective system है ये, because this person who is here, मान लेते home minister in waiting, he will keep a very strong eye on the home minister concerned. उसके पूरे डिपार्टमेंट पे एक एक पैनी नजर रखेगा, because he knows if his government is elected, he will become home minister. It is already declared. ये बदलते नहीं है. अपोजिशन में ऑलरेडी डिक्लेयर कर देती है अपोजिशन कि ये व्यक्ति हमारा होम, अगर हमारी सरकार बनती है तो ये होम मिनिस्टर बनेगा, ये फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, ये फॉरेन मिनिस्टर बनेगा. ऑलरेडी डिक्लेयर होता है. इससे इन्हें भी पता होता है कि हमें क्या रोल मिलेगा. अभी क्या किसी को नहीं पता. सरकार बनी तो बनी, नहीं बनी तो पता नहीं, बनी तो भी पता नहीं. सरकार बन भी गई तो आपको नहीं पता, क्या पता आपको कोई रोल मिले ही ना, और क्या पता मिल भी जाए. तो यहाँ पे क्लियरिटी मिल जाता है. So if you know that your home ministry is waiting, so you will be very vigilant and active also. यहाँ पे आपको आइडिया नहीं है, मे बी you are the most working MP of a party. हो सकता है इलेक्शन के बाद आपको कोई सीट ही ना मिले, इसलिए बंदा कहता है मैं क्यों एफर्ट लगाऊं. तो ठीक है, बट मल्टी पार्टी सिस्टम में इट इज नॉट एप्लीकेबल. इट इज ओनली एप्लीकेबल इन टू पार्टी सिस्टम. चलिए लिखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो कैबिनेट में लिखिए. द आइडिया, किचन कैबिनेट. The idea of kitchen cabinet emerged during the time of Indira Gandhi. During the time of Indira Gandhi, full stop. She was a strong ruler. He was a strong ruler assisted by few near and dear ones. Full stop. These people influenced her policies. Without holding any position. In the government. Full stop. For example, Sanjay Gandhi. Full stop. For example, Sanjay Gandhi.
Sanjay Gandhi, full stop. Next para. The name is driven. The name is driven from the fact. The name is driven from the fact that the decisions of Council of Ministers are pre-cooked outside the meeting. Pre-cooked outside the meeting and presented to the cabinet for ratification only. To the cabinet for ratification only. Full stop. ठीक है, चलिए इसे भी लिख लीजिए. तो वी वर थिंकिंग ऑफ डूइंग इट लेटर. लिख लीजिए इसे भी. चलिए राइट दिस डाउन. केस स्टडी शैडो कैबिनेट. ठीक है, एंड गिव मी अ मिनट. उसके बाद हाँ, काइंड ऑफ. चलिए, सो राइट डाउन. शैडो कैबिनेट लिख लीजिए. शैडो कैबिनेट में राइट डाउन. इट इज अ प्रैक्टिस इन ब्रिटेन. It is a practice in Britain to form a mirroring council of minister. A mirroring council of minister with respect to the council of ministers in power. With respect to the council of ministers in power. Full stop. Next para में लिखिए. It has advantages. It has advantages because the party in opposition can keep a proper eye on the party in power. Full stop. Next para. It has limitation.
it has limitation because it can be operationalized. It can be operationalized in a two-party system only. It can be operationalized in a two-party system only, and not a multi-party system like India. Multi-party system like India. ठीक है, next chapter write down Vice President of India. Next chapter, Vice President of India. Vice President of India. हाँ, so what is the role of Vice President? इसमें कुछ खास नहीं है. Just remember that the Vice President is elected by the MPs of both the houses. Basically, he is elected by all the MPs of Lok Sabha and Rajya Sabha voting. Same mechanism, single transferable vote and proportional representation से Vice President is chosen. Vice President does nothing. That's why he is known as pious superfluous. काम पायर सुपरफ्लूटियस, मतलब कहने को सुप्रीम लॉर्ड है पर कुछ करता नहीं है. The only role vice president plays is he shall be the president whenever the president office is vacant, and second, he is the ex officio chairman of Rajya Sabha. Ex officio chairman. He is, whosoever becomes the president automatically becomes the chairman of Rajya Sabha, and as a chairman he must regulate like a speaker Rajya Sabha, but he does not have the power like speaker. Speaker is the main power center in the parliament. Nonetheless, Rajya Sabha का regulation of affairs जो होता है chairman के हाथ में होता है, and it is modeled on the vice president of America, because same role vice president of America plays. Beyond that, the vice president of India has no role. कोई काम नहीं करता. He is not even a rubber stamp. ठीक है, उससे भी नीचे है. So he has no role सिवाय chairman बनने के. And grounds for removal, constitution में कोई ground नहीं है, और remove करने का simple सा process है. He is removed by the effective majority of Rajya Sabha and agreed by simple majority of Lok Sabha. So Rajya Sabha में there will be a resolution, and if it is passed by effective majority, remember effective majority, total strength minus vacancies. If he is passed by effective majority, then he shall be removed, and Lok Sabha has to agree by a simple resolution only, और कोई process नहीं है. तो simple appointment है. that critical difference याद रखना. प्रेसिडेंट के केस में प्रेसिडेंट के केस में ओनली इलेक्टेड मेंबर वोट्स, इलेक्टेड एमएलएस एंड इलेक्टेड एमपीज, नो अपॉइंटेड एमपी और मेंबर ऑफ एसएलसी वोट्स. इसके केस में स्टेट का कोई रोल ही नहीं है. ओनली लोकसभा राज्यसभा वोट्स, एंड दैट टू ऑल एमपीज, इलेक्टेड नॉमिनेटेड जैसे भी एमपी हैं सारे वोट करते हैं. रिमूवल में भी सारे पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है, क्लियर? लिख लीजिए, छोटा सा ये लिख लीजिए. Write down Vice President of India में. The Vice President occupies the second highest position. The Vice President occupies the second highest position in the order of precedence. In the order of precedence, full stop. He is modeled after the American Vice President. Modeled after the American Vice President. Full stop. Subheading: Elections of the VP. Elections of the VP.
Within side down. VP, like the president. VP, like the president, is elected indirectly. Is elected indirectly based on proportional representation. Proportional representation and single transferable vote. Proportional representation and single transferable vote. Full stop. However, unlike the president, however, unlike the president, they are following differences. Unlike the president, there are following differences. Number one, both elected and nominated. Both elected and nominated members of parliament. Elected and nominated members of parliament participates. Next, no MLA, no MLA or MLC, no MLA or MLC participates. ठीक है, full stop. Next item, removal of the VP. सर इसका मतलब हर एक एमपी का वोट का तो वेटेज सेम ही रहता है. Next item, removal of the VP. देखिए, the Indian VP has a tenure of the Indian VP has a tenure of 5 years. Full stop. However, he can be removed from the office under Article 67. Removed from the office under Article 67. Full stop. The Constitution provides that the VP can be removed from the office by a resolution of Rajya Sabha. Resolution of Rajya Sabha passed by effective majority. And agreed by Lok Sabha. By a simple majority. Full stop. Next para. No resolution for the removal of VP
No resolution for the removal of VP can be introduced without giving him a notice of 14 days in advance. Notice of 14 days in advance. Full stop. Subheading: grounds for removal. Grounds for removal. Within this, write down: there is no ground. There is no ground for removal. There is no ground for removal. Full stop. Next, write down functions of the VP. Functions of the VP. Within this, write down the functions of the VP. The functions of the VP in India are nominal in nature. VP in India are nominal in nature. Full stop. They are largely as following. They are largely as following. Number one, he act as the ex officio chairman. Act as the ex officio chairman of Rajya Sabha. Ex officio chairman of Rajya Sabha. Full stop. Next point. He acts like the president. Acts like the president whenever there is a vacancy. Whenever there is a vacancy in the office of president. In the office of president. Full stop. Next, write down Indian VP versus heading है Indian VP versus American VP. Indian VP versus American VP. Within this, write down the Indian VP serves as the president for the period of 6 months. Serves as the president for the period of 6 months at most. Because Indian Constitution provides compulsory elections. Provides compulsory elections for the president. Compulsory elections for the president within 6 months of the vacancy. Compulsory election of the president within
6 months of the vacancy, full stop. On the contrary, the American president continues. Contrary, the American president continues in office for the natural term of American president. For the natural term of American president. So with this note, our vice president ends. Now start Parliament of India. Next chapter. And the most important and the lengthiest one. Parliament of India. In this, we will discuss the parliament. Initially, we will discuss few basics. Then we will move on to graduate to issues, most important issues in electoral politics in parliament. Then we will move to the interstate relations, legislative, administrative, financial. We will understand emergencies. So, a large part of polity is under the Parliament of India, and the state have exact replica of the union. तो वहां पे स्पेशल पढ़ने की जरूरत नहीं. इफ यू अंडरस्टैंड द यूनियन यू अंडरस्टैंड द स्टेट. जुडिशरी तो एग्जैक्टली सेम है. दे हैव फ्यू पावर डिफरेंसेस दैट यू कैन अंडरस्टैंड लेटर. जुडिशरी में थोड़ा समझ लेंगे हम. एज फार एज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर इज कंसर्न, दे आर एग्जैक्ट रेप्लिका. स्टेट पे वही है जो यूनियन पे. हाउएवर दे हैव सम डिफरेंसेस, लाइक द रोल ऑफ गवर्नर इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम प्रेसिडेंट, एंड द रिलेशन बिटवीन द अपर हाउस ऑफ द स्टेट एसएलसी एंड द एसएलए थोड़ा अलग है. So except for these two differences, largely कोई difference है नहीं. So whatever we will do Parliament of India में, you can apply that as it is to the states without worrying about the equation there. ठीक है. Having said that, let's understand Parliament of India. So basically Parliament of India में कौन कौन आता है? Parliament of India में the structure is that there are three parts of the Parliament of India. What are the three parts? The President himself, the upper house known as Rajya Sabha, upper house, Council of State, आपका क्या बोलते हैं, House of Elders, बहुत नाम है इसके. House of Defeated Politician also, colloquially speaking. ठीक है. House of Non-Compatible People. Next लोकसभा. लोकसभा के बहुत नाम आप दे सकते हैं. Lower House, the House represent will of people. आपका क्या बोल सकते, पॉपुलर हाउस, बहुत नाम है. बट जनरली वी कॉल देम राज्यसभा, द अपर हाउस, लोअर हाउस, लोकसभा. बेसिकली लोकसभा रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द पीपल, द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ द स्टेट्स, काउंसिल ऑफ स्टेट्स बेसिकली. ठीक है. प्रेसिडेंट इज द इंटीग्रल पार्ट. सो प्रेसिडेंट हियर प्लेस डबल रोल. प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव. देखिए हमने क्या समझा था, स्टेट के वी हैव डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट्स. The legislature and executive are two different organs of the state, but president here has a dual role. He behaves as the part of the executive as well as the part of the legislature. Having said that, बाकी president का रोल हम समझ चुके हैं. कुछ खास जिंदगी में इसने करा नहीं और ना ये करता है. ठीक है. So with that note, president को हम already समझ चुके हैं. We will start with the लोक सभा first. ठीक है. So let's start with लोक सभा. Lok Sabha, also known as the popular house or the lower house of the, or representing the will of the people. Main thing is elections. So the elections in Lok Sabha में पता ही है, simple से election होते हैं Lok Sabha में. Election in Lok Sabha is by the methodology that we have discussed earlier also. FPTP माने first past the post. So we have discussed this already, that FPTP में it doesn't matter who has the maximum vote, it matters who has the maximum vote than other people. इससे कोई मतलब नहीं है. You may be representing the minority of population. You may be representing a minority of population, yet you will be chosen as the leader. So that is what you have in Lok Sabha. The present strength हमारी है कितनी है, कुछ पता है किसी को? The maximum strength is fixed at
552 में एक तो फैक्चुअल डेटा है 552 आउट ऑफ विच 530 आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स 530 are the representative of states 20 can be from union territories and 2 Anglo-Indians appointed by the president. Who are Anglo-Indians? The Anglo-Indians whose father was the British या any European and the mother often was Indian. So that is what you have. But what is the present status? This is maximum that can be there. Present status is that this has been expired after 2020. Because आपको पता होगा the reservation in parliament is renewed after every 10 years. हर 10 साल में renew होता है. So the last expiry came in 2020. Modi government renewed reservation again. But this time they have not renewed the Anglo-Indians. So the Anglo-Indians have no role whatsoever. अब बचे ये लोग 530 plus 20. Within this 530 तो पूरे हैं. The 530 of the people are the representative of the state. They're chosen by the people around the country. So they are complete. इसमें कमी है. We currently have only 13. 13 ही है. Yes. We have 13 members right now. So there is a scope of 7. अब ये 7 कहाँ से आएंगे? The constitution provides that the state having legislature can choose their leader directly. The state इसमें कुछ confusion लग रही है. हाँ ठीक है 13 हमारे कहाँ है यूटी से है 7 की वैकेंसी अभी और है मतलब if government wants government can increase the representation from the states उनको 7 सीट और दे सकती है अगर चाहे तो अभी ऐसा कुछ नहीं है but nonetheless this is our representation. अब what is the current representation क्या बन गया हिसाब लगाइए कितना हो गया ये 543. So this is the present strength of Lok Sabha 543 out of which 530 are the people from the state and 13 out of 20 होने चाहिए थे but 13 MPs are from union territories. चलो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम अब आएगा. What is the problem? The problem is Article 81 and Article 82. They deals with a peculiar phenomenon known as delimitation. What is delimitation? The Constitution says that the Parliament of India will pass a law to establish a delimitation commission that will redraw the boundary of India. Political boundary of India. कैसे? जैसे currently you have 530 and plus 13, but they are distributed according to population. Article 81 talks about something we call that national principle. अभी national principle क्या है? National principle means that every Lok Sabha constituency shall have roughly equal population. Every Lok Sabha constituency shall have roughly equal population. Means every MP shall represent roughly equal number of people. अब obviously बात है if a state is sparsely populated, so they will have less MPs. If a state is densely populated, they will have more MPs. And geographical area में अगर हम देखें if a state has less number of population and people are settled in remote areas, so the MP may represent a larger place, maybe even a district. अब दिल्ली के केस में आप देख लीजिए दिल्ली में even a small place called Chandni Chowk has its own MP. Okay, it is so densely populated, it will be like an entire state. Because कई राज्यों में आपके पास सीटें नहीं होती. दिल्ली की entire अगर सीटें देखें लोकसभा में 7 है. There are 7 seats from Delhi and the remaining 5 are from Puducherry. So there are 7 seats from Delhi in Lok Sabha. जबकि दिल्ली है कितना सा? There are a lot of states and there are bigger states in northeast. जो दिल्ली से बड़े still they do not have that much representation. चलो वो तो ज्योग्राफी का इशू नहीं है, इशू है पॉपुलेशन का. अब इशू आ रहा है नॉर्थ वर्सेस साउथ और इशू दोबारा आएगा कब 2026 में बिकॉज है नहीं डिलिमिटेशन बिकॉज एक प्रॉब्लम है. लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो राइट नाउ देयर इज समथिंग वी कॉल TFR टोटल फर्टिलिटी रेट.
TFR हमने शायद करंट अफेयर्स में कई बार डिस्कस किया होगा. TFR represent the average number of children a healthy woman will bear in her entire productive life. अब बिहार का है 3.5 और 6 समथिंग, एंड द स्टेट्स ऑफ साउथ हैव लेस देन 2. हमारा टारगेट याद रखिएगा, अवर टोटल फर्टिलिटी रेट टारगेट इज 2.1. घट चुका है हमारा, करंट है हमारा 2.04 समथिंग. मींस वी हैव इंडिया में वी हैव लेस पीपल देन वी डिजायर. 2.1 का मतलब द टू कपल, मतलब पार्टनर, टू पार्टनर शैल हैव ऑन एन एवरेज 2.1 चिल्ड्रन. हमारे पास 2.1 से कम है. 2.1 का मतलब होता है that we have a perfectly fine replacement rate. 2 people will die, they will give birth to 2 and plus 1. इससे क्या होता है? Your population will remain younger. अब प्रॉब्लम क्या है? इससे कम हो गया. फिर एक क्वेश्चन आता है, if India's population is decreasing, then why there is a debate on child loss? जैसे यूपी डिस्कस कर रहा था ना, we shall bring laws to family plan. फैमिली प्लानिंग के लिए लॉ क्यों लाना चाहती है सरकार? पॉलिटिकल रीजंस है. एक और रीजन है that in some state we have to increase TFR, in some state we have to decrease TFR. जैसे स्टेट लाइक यूपी बिहार में we have to decrease 3.5 तो बहुत ही ज्यादा है. We should bring it to 2.1 or maybe 2.4, 2.5. States in south, वहां जहां पे 2 से नीचे चला गया है, वहां पे we need to increase. अब why this difference? Why the North Indian state do not have this? वो सुना है ना, काम काज नहीं करोगे तो बच्चे ही पैदा करोगे. सही बात है, बिकॉज साउथ में दे हैव 100% लिटरेसी. पर्टिकुलरली केरला में देयर इज 100% लिटरेसी, प्राइमरी एजुकेशन अमंग मेल एंड फीमेल. एंड आपको पता होगा केरला इज द ओनली स्टेट इन इंडिया विद मोर फीमेल देन मेल. इकलौती स्टेट है पूरे इंडिया में. व्हाई इज इट सो? एजुकेशन. दिस इज कंक्लूसिवली प्रूवन, द मोर एजुकेशन यू गिव टू अ गर्ल चाइल्ड, द मोर चांसेस दे विल बी स्ट्रेंथन. एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है, if you teach a man, you teach a person, you teach a woman, you teach entire generation. Why is it so? Because we have given them the task of family. They are the people who bring the child. They are the people who raise the child majorly. इसलिए जाता जब वो चोट लगती है तो मम्मी याद करते हो. पापा कोई कोई करता होगा, I don't know, but general sense मम्मी का ही है. The reason being they are always available. बात समझ में? So if that person is literate, that person makes sure that the entire family becomes literate. इसलिए एक नया ट्रेंड पैदा हुआ है, पटियाकल बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, that people nowadays prefer a girl who is literate but not working. It's very common. जैसे मैंने करंट अफेयर्स में भी बताया था, that is a study published by Indian Express या टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश की थी, मुझे याद नहीं आ रहा, 1 साल पुरानी है. They analyzed all the matrimonial website and they found the girls who mentioned that we want to work after marriage had the least proposals. So basic logic is, and it's very common, and it is particularly common among the more literate people in India. जितना आप लिटरेसी बढ़ा दोगे, मेल की बात कर रहा हूँ, they have a tendency, they want a woman who is literate. अनपढ़ से नहीं करनी उन्हें शादी, but still they want a woman who will not work after marriage. और मैंने आपको बताया था, as family income increases, the tendency of that family to have their woman working outside decreases. When I say working, I'm not talking about becoming IAS, doctor, engineer. वो एक अलग है. These are professional jobs, इनकी कोई बात नहीं कर रहा. I'm talking about the remaining 99% of India. बात समझ में आई? So nonetheless, इससे एक बात तो क्लियर है, more education, more investment in education means more benefits. और सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है प्राइमरी एजुकेशन में. सेम वे में द मैक्सिमम बेनिफिट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्राइमरी हेल्थ. ऑलवेज रिमेंबर, 1 rupee we invest in a kid gives 100 rupees in return when that kid grows up. अगर आप आज 1 रुपए इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कल 2000 रुपए करने पड़ेंगे. एंड द पर्टिकुलर क्रिटिकल पीरियड इज 3rd trimester to 1000 days. 3rd trimester से लेके 1000 days तक जो क्रिटिकल पीरियड होता है किड का, at that point of time nutrition dictates the health dictates schooling, because if you will get ill less, you will be staying in school more, you will have better learning out. It is conclusively proven. So invest 1 rupee in a kid and reap 100 rupees in a benefit. Otherwise, you build better school, better colleges. So it's invest crores of rupees to build a better school, or invest 10 rupees for a good IVI tablet. यहाँ तक बात समझ में? अब southern states have a very good record of socio-economic development. जैसे आजकल एक ड्रामा चल रहा है, यूनाइटेड
यूनाइटेड सदर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। टैक्सेशन को लेके साउथ में एक ड्रामा शुरू हुआ था दैट ये है थोड़ा साउथ का है, बिकॉज वेन यू विल डू इकोनॉमिक्स आप समझेंगे इंडिया में, यहाँ पे भी हम फाइनेंसिस में समझेंगे, फाइनेंशियल रिलेशंस में इंडिया इज अ हाईली सेंट्रलाइज्ड फेडरेशन। So what happens is, of all the state, the Union of India takes money and then distribute money according to Finance Commission's recommendation, plus central sector schemes and centrally sponsored scheme. That is the maximum proportion. इस ईयर का अगर आपने इंटरिम बजट की वीडियो देखी होगी तो हमने करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था that the allocation as a devolution to states and state centrally sponsored and center sector scheme combined is equal. So if I'm giving 1 rupee to the state as a part of their share in the revenue, plus 1 rupee I am giving them conditional based on the schemes. अब यहाँ आती है प्रॉब्लम। Southern state says, यार we are doing better than you. We are doing everything right. We are investing in health. आपको पता होगा India's health capital किसे बोलते हैं? पता है कुछ? जैसे मुंबई is known as financial capital of India. Delhi is known as political capital of India. What is the health capital of India? Chennai. Chennai is known as India's health capital. Notice this: if you go to private hospitals, North India में जितने private hospitals हैं, maximum nurses are from South. This is a common pattern you will find because they have a better education in medicines. Chennai particularly. Nonetheless, is a problem. क्या Southern Indian state says, यार we are investing everything good. We have very good socioeconomic outcomes. We have health outcomes which are better. We have educational outcome which is better. We are better than any of the northern state in any parameter you can pick. हो सकता है there may be 1 or 2 parameter we are behind, but overall our achievement is way better than yours. But then you are punishing us because यहाँ पे principle क्या है? National principle. So if Bihar has 3.6 fertility rate, the Bihar's population will increase at a rapid pace. Jabki the southern state who have less than 2, their population is not increasing, their population is decreasing. And this is leading to a problem. Every time delimitation happens, उसके साथ क्या होता है delimitation के साथ? Readjustment of seats. मान लेते हैं in this delimitation, Tamil Nadu has 20 seats, say for example, and UP has 40 seats. Because UP has more population than Tamil Nadu. After 10 years, Tamil Nadu's population will be even lesser because their fertility rate is less than 2. UP's population will be even more. So next time jab hoga, Tamil Nadu may have 10 seats and UP may get 50 seats. If we assume seats are same. If we assume seats are not increased, then UP may get 10 seats out of Tamil Nadu. Because India mein the principle is national. Every constituency shall have roughly equal population. अब ये बड़ा प्रॉब्लम है। Southern state says you punish us for the good work. एक तो हमने काम अच्छा किया, हमने स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, we focused on health, हमने education पे ध्यान दिया, ऊपर से punishment भी हमें मिल रहा है. And that's why they often time get angry. जैसे recent में हुआ था when मोदी जी gave a slogan, रेवड़ी कल्चर. अब नहीं बोलेगी बीजेपी क्योंकि मोदी की गारंटी आ चुकी है. तो actually Kejriwal went to Gujarat election and as Kejriwal always do, ye bhi free, wo bhi free, wo bhi free. And so Modi, as a counter to Kejriwal, said, people who give everything for free never build highways, expressways. Logic ये है जो लोग आपको मुफ्त की चीजें देते हैं वो एक्सप्रेसवे हाईवे नहीं बनाते. सुनने में अच्छा लगा. And he coined this रेवड़ी कल्चर. जैसे रेवड़ी होती है that you distribute after कोई पूजा वूजा करवाते हैं, then you give in as a प्रसाद. It is free for all. Same way it is free. बुरा मान गया मोदी जी. ठीक है. Same way it is free in this case also. अब प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम ये आई that there was a southern finance minister, Tamil Nadu finance minister. He was giving an interview to Rajiv Sardesai of the India Today, and he asked this question that Modi ji is saying this, and Supreme Court ने भी उसमें में comment करा था that we have to do something with रेवड़ी culture. ऐसी चलती दुनिया. अब तमिलनाडु इज फेमस फॉर इट. तमिलनाडु में कुछ भी मिलता है. यस, तमिलनाडु में साड़ी, साइकिल, चूल्हा, वो पुराना हिसाब है तमिलनाडु का. हाँ, तो इलेक्शन टाइम पे तमिलनाडु में देयर आर लॉट ऑफ फ्रीबीज एंड तमिलनाडु इज वेरी नोटोरियस फॉर दिस. अब धीरे धीरे ये बाकी जगहों पे भी आ रहा है, लेकिन अभी भी वैसा नहीं है. ज्यादा स्टेट में क्या है? फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर.
तमिलनाडु में कुछ भी साड़ी, साइकिल, लैपटॉप, क्या क्या मिला है, शुरुआत से मिलता आया है. बट तमिलनाडु का जो फाइनेंस मिनिस्टर, ही गॉट एंग्री. ही इज लाइक, हु आर यू टू टेल अस? वी give 1 rupee to center gives us 20 पैसा back, and your spoiled state, नाम नहीं लिया उन्होंने किसी का, and your spoiled state, basically was talking about यूपी, बिहार, गुजरात वगैरह, these state gives you 20 पैसा and take 50 पैसा back. So you are giving them more than they gives you, you're giving us less than we gives you. But that's how family works. फैमिली ऐसे ही काम करती है. फैमिली में द पेरेंट्स, इफ मान लेते नंबर ऑफ सिबलिंग्स, हर कोई एक जैसा नहीं कमाता है. तो द पेरेंट्स टेक द मनी, पूल्स इनटू अ सेंट्रल फंड एंड गिव्स टू द किड्स अकॉर्डिंग टू नीड. इसलिए आप एक पैटर्न नोटिस करना, इन फैमिलीज पेरेंट्स ऑफन लव द वीकेस्ट. ये हर फैमिली की कहानी है. अब जो स्ट्रॉन्गेस्ट किड होता है वो बुरा मानता है इस बात का कि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, पापा जी मुझे तो कुछ नहीं करते, आई एम सर्वाइविंग ऑन माई मनी, ऊपर से मुझसे पैसे ले और लेते हैं, उसे देखो मजे से घूम रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं इसका. ठीक है, बट दैट्स हाउ फैमिली वर्क्स. पेरेंट्स आर ऑलवेज सेंसिटिव एंड दे हैव अ काइंड हार्ट टुवर्ड द वीकेस्ट किड. सेम सेंटर के केस में जाता है. द यूनियन ऑफन हैज अ काइंड हार्ट टुवर्ड द वीकेस्ट स्टेट्स ऑफ इंडिया. पर जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट है वो कहती है चलो ले लो पैसे, पर बकैती तो मत मारो हमसे. अब प्रॉब्लम कहाँ आएगी? ये लिमिटेशन दोबारा होगा 2026 में. हाँ, वही मैं आने वाला था. Constitution says that delimitation shall happen after census every 10 years. क्यों? Because population migrates. हर जगह लोग माइग्रेट करते हैं. Today the constituency are roughly equal. पर 10 साल बाद वो नहीं होगा. 10 साल बाद में some people may have moved from Delhi to Tamil Nadu, some people may have gone to Northeast. So composition of the constituency will have changed. So after every census, it is assumed in the constitution that there shall be a delimitation. It happened. For 3 times it happened after 10 years. 1960 आपका 1951 में 1952 तक हुआ था शायद, 62 72 इंदिरा गांधी के टाइम तक. After that इंदिरा गांधी stopped it and the last delimitation happened I think in 2000 या फिर 2016 में 15 में लास्ट हुआ था. That was the last delimitation. तो 1970 के बाद सीधा कब होता है? 2001 में जाके. And since then it is blocked. The next delimitation will happen 2026 और ये प्रॉब्लम फिर आएगी. Because when 2026 में delimitation will happen, the southern states will be very angry. They will be like, we invested in health, we invested in education, you can pick any socioeconomic indicator and you will find us better. इसीलिए there is an argument recent days में some ministers of South India, some states of South India, they are calling that United States of South India. Because if you take South India as a separate country, it's a developed country. It is because of North India it is developing. Otherwise socioeconomic indicators में आप देखें तो South India developed countries की कैटेगरी में आ सकता है. But nonetheless, फैमिली ऐसे ही काम करती है anyway. अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है एक तो आपने काम बुरा किया, ऊपर से रिवॉर्ड आपको मिल रहा है. You have not invested in family planning, you have not invested in health. जैसे if you look at बिहार में बहुत बुरी हालात है. बिहार में I think male literacy is at 70 something and female literacy 60s में है. 60s में 75 years इंडिपेंडेंस और आपकी फीमेल लिटरेसी क्या है? 60s में है. मतलब 75 साल में आपने कुछ नहीं करा जिंदगी में. और इंडिया में लिटरेसी की डेफिनेशन भी खराब है. इंडिया में लिटरेसी की डेफिनेशन है अ पर्सन अबव द एज ऑफ 6 एबल टू डू कैलकुलेशन, able to read, write and do basic mathematical calculations. यहाँ पे डिग्री, लिटरेसी का मतलब ये नहीं कि आपके पास डिग्री है. लिटरेसी का मतलब you can read, you can write and can do basic mathematical calculation, प्लस माइनस वाली कैलकुलेशन. सो इतना लो स्टैंडर्ड है, उसके बावजूद भी बिहार इज इन 60s एंड मेल में 70s. pathetic condition. And plus you have high fertility, 3.5 or 6 something, unimaginably high. Because of this, Bihar's population is increasing at a rapid pace. अब जब ये लिमिटेशन होगा, 2001 का हुआ था, अब ये होगा आई थिंक 25 years later. अब क्या होगा? 25 years में बिहार population must have shot up and the southern India's population may have gone down, and the political seats, the political powers will shift from south to north. इसलिए आपने स्टेटमेंट सुना होगा ना, that the government of that central governments come from UP Bihar. There is a saying,
Nobody can become prime minister without capturing यूपी बिहार. सीटी इतनी है उनके पास. अब ये हम एक पेक्युलर फिनोमिना देख रहे हैं. The states which are politically empowered are often economically weak. ये हमने बहुत जगहों पे पैटर्न देखा है that states who are often politically empowered are economically weak. This is what we call mirage of power. Northern state को क्या लगता है that they are India. और ये बड़ा कॉमन है. अब ये सदर्न स्टेट्स में भी आ रहा है. रिसेंट में देयर वाज अ क्लिप व्हिच वेंट वायरल. देयर वाज अ कन्नड़ा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, एंड ही वाज कॉलिंग टू अ वुमन स्पीकिंग हिंदी, गो बैक टू पाकिस्तान. ठीक है, ऑटो ड्राइवर था शायद. तो ही थिंक्स इफ यू डोंट स्पीक कन्नड़ा देन यू आर अ पाकिस्तानी, बिकॉज उर्दू हिंदी सेम लगता है. नॉनदलेस अब ये नॉर्थ इंडिया के साथ भी प्रॉब्लम है. नॉर्थ इंडियंस अज्यूम इफ यू आर नॉट अ हिंदी स्पीकर you are not from India. For example, particularly if you do not look like us, Aryans, Indo-European, if you do not look like us and if you look like Mongoloid race है, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, they have Mongoloidic features, like Chinese, Japanese features. वो उन्हें क्या बोला था, चिंकी. पॉपुलर फेस है दिल्ली में, मुझे नहीं पता आपकी स्टेट का. दिल्ली में they popularly known as चिंकी. अब ये बड़ी प्रॉब्लम है that उनको लगता है if you look like me and if you speak Hindi then you are Indian. अब ये प्रॉब्लम 2026 में बढ़ेगी. अब इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम हमने समझ ली. प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेज एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी shall have roughly equal population. So the southern India is losing seats, means losing seats means losing political power. And I told you, political power is the answer to any problem. The real power which you can wield to bring any change you want. वैसे हिटलर को कोट नहीं करना चाहिए कहीं पे, बट नॉनदलेस हिटलर ने एक ही बात समझदारी वाली बोली थी, इफ यू डोंट लाइक समथिंग राइज इनटू पावर, चेंज इट. कोई चीज पसंद नहीं है तो भीख मत मांगो, चेंज कर दो, राइज इनटू पावर, चेंज व्हाटएवर यू वांट. सो सेम थिंग इज हियर, पॉलिटिकल पावर इज द फाइनल आउटकम. यही मैंने आपको कई बार समझाया था, वुमेन राइट्स में ही समझाया था मैंने आपको. द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हाई द वुमेन आर सेकंड क्लास सिटीजन अराउंड द वर्ल्ड, दे आर नॉट अ पॉलिटिकल कॉर्पस. They are 50% of India, but yet they are divided in the name of religion, caste, region, languages. So no unity, no political power. No political power, no change in your favor. Same यहाँ पे है. Southern states are crying. एक तो आपने हमारा पैसा लूटा by having this financial centralization. ऊपर से आप हमारी political power भी छीन रहे हो. You're leaving nothing with us. तो इसका करे क्या? Solution क्या हो सकता है? मुझे पता है नहीं होने वाला वो solution, but still I was pondering over this idea, so I thought something out of it. What we can do is, rather than using population as a criteria, we can use some composite metrics in which we can give weightage. जैसे आपका, अगर आपको पता फाइनेंस कमीशन जो होता है, फाइनेंस कमीशन recommends on the basis of a composite metrics. Composite metrics like population may be given 40% weightage, geography or territory may be given, for example, 30% weightage. Climate change, efforts on climate change and disaster management, 5% weightage. इसी तरीके से what we can do is we can build a new criteria in which we can say that population of a state or a roughly equal constituency, say for example, और ये देखिए, this concern is less in लोकसभा, it is more in राज्यसभा. क्योंकि राज्यसभा में एक और प्रॉब्लम आता है. देखिए, लोकसभा में एटलीस्ट everyone has representation. राज्यसभा में बड़ा प्रॉब्लम है. राज्यसभा में every state gets seats because Rajya Sabha's MPs are chosen by indirect election by MLA. So number of MPs as state gets depends upon their population as a factor. तो उसमें सजेस्ट किया गया है, यूएस में क्या है, यूएस में क्लियर है, every state will have 2 seats in Senate, that is the upper house of US, irrespective of your size and population. India में you have seats in Rajya Sabha depending on your population. So what the southern state should want is कि ऐसे गड़बड़ हो रहा है. Our population is decreasing, yours is increasing. एक तो आप all the MPs will shift toward the north. लोकसभा में, even in Rajya Sabha you will get more seats, and we will lose power to choose our MPs. अभी अगर मान लेते हैं तमिलनाडु is choosing 6 MPs to Rajya Sabha, अगली बार हो सकता है 4 ही बचे, because those seats are shifting to the north. तो सॉल्यूशन सजेस्ट ये क्या करा गया है, मतलब मैंने सोचा है, हो सकता है यू मे एग्री और नॉट, वी कैन हैव अ कंपोजिट मैट्रिक्स इन विच वी कैन गिव वेटेज. लेट्स से फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन 60%, टेरिटरी को वी कैन गिव 20% वेटेज, बाकी वी शुड इंक्लूड सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर.
एज अ कंपल्सरी वेटेज ऑफ 10 और 20 जो भी बनता हो कंपल्सरी, सो दैट द स्टेट्स हु आर वर्किंग, मेरे हिसाब से तो इससे ज्यादा वेटेज देना चाहिए. We should give more weightage to socio-economic indicators. If you are good on health, if you are good on education, water, sanitation, तो you will get more seat in राज्यसभा. लोकसभा का तो ऐसा नहीं कर पाएंगे हम, but राज्यसभा में कर सकते हैं. That more better socio-economic indicator means more seats in राज्यसभा. तो इससे क्या होगा? There will be a fight among the states. Everyone will try to achieve not more population but more socio-economic indicators. And इससे फायदा ये होगा, if you will have better output, if your people have better access to health education, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और जिनकी नहीं होगा उन्हें पनिशमेंट. इट कुड बी गुड. लोकसभा में तो मुश्किल होगा ये करना, बिकॉज लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर मेड. लोकसभा में एंटायर इंडिया इज कंसीडर्ड एज वन स्टेट एंड देन कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर ड्रॉन. लोकसभा में बाउंड्री नहीं देखा जाता है. अब ये चीज राज्यसभा में नहीं हो सकती. राज्यसभा में बाउंड्री होती है. एवरी स्टेट हैज अ फिक्स्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एमपीज इन राज्यसभा. ठीक है, तो वी कैन ड्रॉ अ कंपोजिट मैट्रिक्स इन वी कैन इंक्लूड दिस एज अ परमानेंट फीचर. द बेटर द सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर, द बेटर इज द रिवॉर्ड. बेटर वो काम कीजिए, बेटर पॉलिटिकल पावर लीजिए. बात समझ में? सो दिस इज द डिबेट वी हैव ऑन डिलिमिटेशन. ऑनलाइन पीपल क्लियर? कुशाली, वारदा? यस, ऑफ कोर्स. सो उस पर भी बात चल रही है, बिकॉज इंडिया पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया है. When India started, we had around 40 or 60 करोड़ people. अब हमारे 140 हो गए. तो पिछले 75 साल में मैं दुगनी आबादी कर दी है अपनी. सो इंडिया में 1 MP पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज्यादा है. तो सजेस्ट ये किया जा रहा है दैट वी शुड मेक द ट्वाइस द सीट्स. अभी हमारी कितनी है? 550 है. इसको दुगना करने की बात हो रही है. इट शुड बी 1000 और 1000 के आसपास ले जाएं. बट पता नहीं. देखिए, इस वही वाली बात है. व्हेन द न्यू पार्लियामेंट वाज मेड, देयर वाज अ कमेंट बाय अ स्कॉलर, आई विल नॉट नेम हिम बिकॉज उसे जिंदगी प्यारी है, मुझे भी. तो ही सेड वन थिंग, संसद तो बना दी, लोकतंत्र का क्या? बात समझ में आई? बाय इंक्रीजिंग एमपीज द क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस डज नॉट इंप्रूव. ये पूरी दुनिया में कहीं नहीं हुआ. हाँ, you can make an argument that because of high population, one MP find it hard to govern everyone. वो सही बात है. लेकिन by increasing MP, you will have better quality of governance. इसका कोई पैरामीटर नहीं है, दुनिया में कहीं नहीं है. यही काम नहीं कर रहे हैं हमारे. ठीक, ये इनमें से आधे क्रिमिनल्स और मर्डरर बैठे हुए हैं. तो ठीक है, देखते हैं उसका क्या होगा. और उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाए? अभी लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए लगता है. ठीक है, पर सेशन लग जाता है. मेरे ख्याल में पर सिटिंग का सीन है शायद, ये सेशन का मुझे याद नहीं एग्जैक्ट. सेशन मान लेते हैं, सेशन लगभग 1 महीने का मानते हैं, तो 5 से 6 करोड़ रुपए पर सेशन लग जाता है. फिर क्या होगा? दुगना तिगना लगेगा, क्योंकि इनको जब आप MP बनाओगे तो इनकी फैसिलिटी भी देना पड़ेगा, घर देना पड़ेगा, गाड़ी देना पड़ेगा, बंगला देना पड़ेगा, और ये फॉर्च्यूनर से नीचे मांगेंगे नहीं. था देयर वाज अ MP chosen and he was given some car. I think कोई कार मिली थी, गवर्नमेंट की कार थी जो भी थी, and he launched an official complaint that I am not getting a Fortuner. इतने भी बुरे हैं. तो ठीक है, ऐसे भी लोग हैं, बट नॉनदलेस. तो वो तो एक सुपरफिशियल सॉल्यूशन है, ये जरूरी है. दिस इज अ नेसेसरी सॉल्यूशन बिकॉज जो सदर्न स्टेट का ग्रीवेंसेस है वो जेन्युइन है. द सदर्न स्टेट ग्रीवेंसेस दैट वी आर डूइंग गुड, यू आर पनिशिंग अस, इट्स अ वेरी जेन्युइन ग्रीवेंस. एंड बाय हैविंग दिस काइंड ऑफ डिलिमिटेशन वी आर पनिशिंग देम फॉर गुड वर्क. इससे क्या होगा? नो स्टेट विल लाइक टू डू द गुड वर्क. क्लियर है? ऑनलाइन आई थिंक क्लियर है. चलिए, सो हैव अ नाइस डे. विल मीट अगेन टुमारो, और ये सब हम कल लिखेंगे. ठीक है, बाय बाय.